Good morning, students. We are studying chapter number 13, Weather, Climate and Adaptation of Animal. In this chapter today we will discuss with you climate and adaptation. So what is climate? Climate of the region affects all the organisms living in it with constant changes in their environment, food chain and climate. Animals must adapt themselves to these changes or face extinction. Means climate क्या है? According to situation, live and survival is said to be your climate. क्लाइमेट में क्या है आपका? किस जगह का हॉट क्लाइमेट है तो हम बोलते हैं ज़्यादा गर्मी है तो बोलते हैं हॉट क्लाइमेट है, और जहाँ पर ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? कोल्ड क्लाइमेट है. सो अडेप्टेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द अडेप्टेशन? Adaptation क्या है? Trait है that makes an animal suited to the environment. It can be behavior or structural trait. Here are some example of behavior as well as structural adaptation. तो adaptation trait है which makes the animal suited to the environment. ठीक है, तो first we will talk about behavior. Moving in large group is a behavior adaptation. It helps protect the members of the group from predators. ठीक है, लार्ज ग्रुप इज सेड टू बी अ बिहेवियर एडेप्टेशन, और ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द मेंबर ऑफ ग्रुप फ्रॉम प्रीडेटर से हेल्प करता है. स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन. द थिक फर कोट ऑफ पोलर बियर इज द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन. जो थिक फर कोट है, it helps to protect it against the cold weather. ये उसको ठंड से बचा कर रखता है. Adaptation usually occur over a long period of time. We shall now talk about the adaptation of animal living in polar region and tropical rain forest. एनिमल जो पोलर रीजन में रह रहे हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में रह रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट, द पोलर रीजन. पोलर रीजन आर द एरिया ऑफ ग्लोब सराउंडिंग द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. पोलर रीजन वाला एरिया कौन सा है? ग्लोब, एरिया ऑफ ग्लोब सराउंडिंग द North Pole and South Pole. They are also known as frigid zones. These regions, resting respectively on the Arctic Ocean and the continent of Antarctica, are dominated by the polar ice caps. United States, Alaska, Canada, Greenland, Sweden, Finland, Norway and Russia, Siberian region are some countries that have some of their parts in this region. कौन से region में? Polar regions में. तो these are the area globe surrounding near the north and the south poles. तो आपके कनाडा के, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, आर्कटिक ओशियन, कुछ पार्ट्स इसके इस रीजन में आते हैं. These regions are very cold. The coldest temperature ever known on Earth, -89 degree Celsius, was recorded in Antarctica. ठीक है, तो ये रीजन सबसे ज़्यादा कोल्ड होते हैं, और अंटार्कटिका में देखो -89 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है. द एवरेज विंटर टेम्परेचर इन आर्कटिस इज अबाउट -30 डिग्री सेल्सियस. इन विंटर्स द सीज सराउंडिंग Antarctica freeze into solid snow that covers an area almost as big as the continent itself.
ठीक है, विंटर्स में ये एरियाज क्या हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं. At the poles, the sun shines for half of the year and it is dark for the other side of the year. पोल्स पे क्या होता है, सन हाफ ऑफ द ईयर के लिए शाइन करता है, रेस्ट में क्या होता है, डार्क होता है. पोलर रीजन्स, पोलर बियर, पेंगुइन्स, reindeer, seals, whales and walrus are some animal found in such a region. तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. नेम सम एनिमल्स दैट लिव्स इन पोलर रीजन. तो यू कैन राइट polar bear, penguin, whale, walrus, etc. are the animals that live in polar region. Let us now find out how these animals are able to survive in such region having such severe and extreme conditions. ठीक है, किस वजह से यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, कैसे. फर्स्ट है एडेप्टेशन बाय एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन. Polar bears have white fur so that they are not easily visible in snowy white background. ठीक है, white fur होती है इनके ऊपर, so that they are not easily visible. The body temperature of polar bear, which is normally 37 degrees Celsius, is maintained through a thick layer of fur, a tough hide, underline, and an insulating layer of blubber. This excellent insulation keeps a polar bear warm even when air temperature drops down to -37 डिग्री सेल्सियस. तो क्या है, इनका एक थिक फर का जो कोट है, ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर ऑफ ब्लॉबर है, जो इनको क्या करती है, वार्म रखती है इतने ठंडे इलाकों में. ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर -37 डिग्री तक भी फॉल डाउन कर जाता है. पोलर बियर्स आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे टेंड्स टू गेट ओवर हीटेड. They move slowly and rest often to cool down on warm days. ठीक है, समटाइम इनका टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है तो ये बड़े धीरे धीरे चलते हैं, रेस्ट करते हैं, कूल रखते हैं अपने आप को इन वार्म डेज. और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी पोलर बियर्स कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स वाइल स्विमिंग अंडर वाटर. ठीक है, और स्विमिंग करते समय अपने नोस्ट्रिल को क्या करते हैं, बंद रखते हैं. अ पोलर बियर्स फ्रंट पॉज प्रोपेल इट थ्रू वाटर फॉर स्विमिंग. फ्रंट पॉज हेल्प करते हैं स्विमिंग के लिए. द हिंड फीट एंड लेग्स आर हेल्ड फ्लैट एंड आर यूज्ड एज रडर्स. ठीक है, और हिंड फीट है ऑफ लेग्स दे हेल्प देम टू यूज्ड एज अ रडर. Another animals well adapted to the polar region is the penguin. Penguin has feathers that are extremely densely packed. ठीक है, feather होते हैं but they are densely packed with no gaps between them. This gives them good protection against cold. This quality helps them to protect them against cold. Each feather has an extra part behind it so that they can fluff their feather up. This keeps them warm in cold and allow them to cool off when the weather is warm. ठीक है, और ये वाले feather हेल्प करते हैं इनके, गर्म रखते हैं कोल्ड में और कूल ऑफ करते हैं when the weather is warm. ठीक है, you can see the picture of penguins in polar region. So this is all about today. Thank you and have a nice day.